Hello students, in our previous lecture we have seen the definition of partnership and the characteristics of partnership. Today's topic is partnership deed. Partnership deed. Deed means one kind of agreement. Deed means one kind of agreement. The emergence of partnership is एग्जिस्टेंट फ्रॉम एग्रीमेंट, यानी किसी भी पार्टनरशिप के लिए पहले कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है. द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न, बट फॉर द लीगल एडवाइस इज द रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर प्रिफरेबल देन द मोरल. जो रिटर्न होता है वो ही अच्छा होता है रिटर्न पार्टनरशिप. रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल so that the solution of any misunderstanding or dispute in future can be obtained on the basis of the provision of the partnership deeds. Means future में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न पार्टनरशिप के थ्रू उसको सॉल्व कर सकता है, बिकॉज so many clauses and provision are included in this partnership deed which is written document. उसमें सारे क्लोजेस, सारे प्रोविजंस, डिस्प्यूट होंगे तो उसको कैसे निपटारा करना है, सब उसमें होता है. द पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड. जैसे देश का संविधान वैसे पार्टनरशिप का संविधान क्या है, पार्टनरशिप डीड. वेयर ऑल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू फर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड. जनरली द फॉलोइंग कंटेंट, उसमें क्या क्या होते हैं. Details of partners means their names, their addresses and their detail of partnerships. Detail of firms, the details like name and address of the firm. Type of business, the information about the type of business is in which type of business. Commencement of partnership, the information about the commencement date of the partnership firm is also covered in it. यानी कब से स्टार्ट हुआ है बिजनेस. commencement means वो बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है वो भी उसमें आएगा. कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल. लिसन स्टूडेंट, व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय ऑनर ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. इन 11th standard we have seen sole proprietorship, only one person is brought down capital, but in partnership firm so many partners are there in a partnership firm, so each and every partners bring some amount as a capital. सभी पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट लाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, whether interest on capital is to be paid or not. If yes, then what percent? These points are mentioned in the partnership fund. इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया जाएगा वो भी पार्टनरशिप डीड में होता है. ड्रॉइंग्स, what maximum amount can be withdrawn by each partner is also mentioned in the partnership deed. कितना अमाउंट पार्टनरशिप पर्सनल यूज के लिए ले जाएंगे पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. what percent interest charged on the amount of drawing is also mentioned in partnership deed. Important point is there is no provision in the partnership act for the interest on drawing, but if necessary such provision can be included in the partnership deed. partnership act में ऐसा कोई provision नहीं है, लेकिन अगर लगे तो उसको कर सकते हैं. distribution of profit and loss, in which proportion profit or loss of business will be distributed among the partners. सभी पार्टनर्स इक्वल कैपिटल लाए होंगे तो इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. सो द प्रपोर्शन ऑफ distribution of profit and loss is also mentioned in this partnership deed. But as a partnership act, profit and loss is distributed in equal proportion. ऐसा उसमें एक्ट में कहा गया है, बट ये जरूरी नहीं है. पार्टनर्स कैन चेंज द proportion according to their will. Salary, bonus, commission and remuneration. Remuneration means वेतन या फिर मेहनताना.
Remuneration means वेतन और मेहनताना. There is no proportion in Partnership Act for payment of salary, bonus, commission and remuneration to the partners. एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. बट इफ एनी पार्टनर्स टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, a provision in MAD the partnership did for the payment of salary. Suppose there are total 5 partners, but one partners take very active in the regular function of partnership. So the partners decide that they will provide some salary to that partners. So this provision is also mentioned in the partnership deed. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनर, सपोज वन पार्टनर्स प्रोवाइड लोन टू द फर्म, so the interest rate must be mentioned in this partnership deed. When any partner has lended a loan to the firm, if no provision in the made in partnership deed, as per the partnership act, 6% will be paid on loan given by the partners. Suppose partners had decided 9% interest on loan, so 9% interest will be provided, but partners not decided, the partners are not decided what percent of interest is provided on loan. So according to partnership act, 6% interest will be paid on the loan provided by partners. अगर कुछ भी डीड में नहीं कहा गया, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 6% इंटरेस्ट. अगर मेंशन है तो जितना मेंशन है उतना. Goodwill, the computation to determine the value of goodwill at the time of admission of a new partner, at the time of retirement or death of a partner is also. जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल में कितना हिस्सा मिलेगा, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या वो चला गया तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, वो सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बताया जाता है. एडमिशन एंड रिटायरमेंट. In 11th standard only one owner of business, but in 12th standard we are going to learn about the partnership account. In partnership account, sometimes new partners are admitted in the partnership fund and sometimes old partners retired from the partnership fund. So this process is also mentioned in the partnership deed, how the new partners are admitted and how the old partners retired. Dissolution. Dissolutions means विसर्जन. Dissolution means विसर्जन. फॉर्म बंद हो जाए, बंद हो जाए. In what circumstance will be dissolved, बंद करना है. What procedure will be adopted, किस प्रोसीजर से उसको बंद करना है. These points are also mentioned in the partnership deed. These points are also mentioned in the partnership deed. How the total process of dissolution will be completed, this process is also mentioned in the partnership deed. Okay? The payment of salary, bonus, commission, remuneration or any other payment only to active partners of a partnership firm is available at deduction as per section 40B of Income Tax Act 1961. ये हम बाद में इसकी जो भी सारे डिस्कशन है वो कर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to accounting treatment in the absence of partnership deed. Suppose some partners are not preparing partnership deed, so some function are applicable to partnership firm according to Indian Partnership Act 1932.
each partner contribute capital in firm by mutual agreement. सभी partners capital लगाएंगे. There is no restriction the act in this regard. It is not mandatory to bring a capital for each partner. सभी partner उसमें capital ऐसा जरूरी नहीं है. Mutual means स्वैच्छिक. Mutual means स्वैच्छिक. Interest on capital of partner cannot be paid according to Indian Partnership Act. Interest of capital cannot be paid. Interest on capital पे interest देना ही नहीं है. The distribution of profit and loss would remain in equal proportion. Profit और loss को equally बांटना है. Interest on drawing of the partner cannot be charged. Drawing पर भी interest नहीं charge करना है. Salary, bonus, कमीशन, रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड. किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी देनी है ना बोनस देना है. 6% पर एन्यूम यानी वार्षिक. पर एन्यूम मीन्स वार्षिक. इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म. लोन पे 6%. इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म, पार्टनर हैज द राइट टू रीइम्ब्योर इट. अगर कोई जरूरी खर्च पार्टनर करता है तो वो खर्च अपना वसूल कर सकता है. These total 7 points are mentioned in the Partnership Act, Indian Partnership Act 1932. In absence of partnership deed, these laws are applicable to each and every partnership fund. But if partner prepared the partnership deed, these laws and these rules are applicable to their partnership firms. Okay student, in our next lecture we will discuss about what type of account we will prepare in partnership firm. Okay students.